In the last class, we have discussed few important question answers of artificial intelligence. Basically, हम लोगों ने deep learning के बारे में पढ़ा था और neural network, activation functions, managing gradient, like overfitting, and learning rate, backpropagation, difference between batch, stochastic, mini batch gradient. और हम लोगों ने देखा था कि मिनी बैच ग्रेडियंट रीजन को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि बैच जो है वो पूरा डेटा एंटायर डेटा सेट को एक ही बार में लेते हैं। वो स्लो है बट एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। स्टोकेस्टिक यूज क्या करते हैं, एक सैंपल को एक बार में लेते हैं, फास्ट होता है बट नॉइजी होता है। मिनी बैच क्या होता है, वो स्मॉल सैंपल्स मतलब एक से ज्यादा अधिक आपका सैंपल्स लेते हैं, पूरा डेटा सेट को नहीं लेते हैं, उसमें से कुछ कुछ सैंपल्स को लेते हैं। तो इसके कारण इसका एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी अच्छा रहता है। ट्रांसफर लर्निंग के बारे में पढ़ा था हमने, जहाँ पे एक पार्टिकुलर मॉडल से जो मिला गया आपका नॉलेज है उसको हम नेक्स्ट मॉडल के में यूज करते हैं, राइट। उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम जेवियर एंड एसी यूज करते हैं। बस इम्पोर्टेंट वही था कि आपका जेवियर जो है 10H और सिग्मोइड के लिए हम यूज करते हैं, एसी जो है हम यूज करते हैं रिलू में। ठीक है, तो आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट, हाउ डज ए सी एन एन वर्क। तो CNN जो है, convolutional neural network, it uses learnable filters, that is kernels, to perform convolution over spatial data. यहाँ देखना मैंने मेंशन किया है over spatial data, और spatial data में images, right? Extracting features like edges, textures and object parts. तो यहाँ convolution neural network, let me show you one diagram for it. See this diagram. Okay, this is a very beautiful diagram. You can see here input image, pooling, convolutional plus redo, then pooling again. So these are the measurements. Ultimately, it is being connected to the fully connected layer, and where this classification takes place. Let me search one better one again. A typical convolutional neural network diagram. This is one of them. So kernel, you can see here, this is the image, this is the input image, or you can say input data. From there, one part has been selected by kernel. So this is known as convolution. Then after that, pooling, again convolution, pooling. So feature maps are there, pulled feature maps are there, then feature maps, pulled feature maps, and ultimately flatten layer. And then we have our final output. So this, from the flatten layer, we have values passed to a fully connected layer. And after that, this part here only when the classification takes place, right? So you have to remember what are the layers are there in CNN. Let me again go through one more diagram. This is one simple example where it takes input image, that is 32 cross 32 cross 1, and then convolution 5 cross 5, average pooling 2 cross 2, then convolution 5 cross 5, again average pooling. So that way, after that fully connected layer, and then output. One more diagram. तो ये पूरा इमेज में से जो इतना पार्ट हमने लिया है, तो कार्डन एंड देन कन्वोल्यूशन प्लस रीलू पुलिंग होते हुए ये सारे जो लेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे हमने फीचर मैप्स आइडेंटिफाई किया, मतलब फीचर को एक्सट्रैक्ट किया। देन ये आप वैल्यूज आते हैं फ्लैटन लेयर में, वन डायमेंशन में कन्वर्ट होता है, फुल्ली कनेक्टेड लेयर क्योंकि वन डायमेंशन में काम करते हैं, और यही आपका क्लासिफिकेशन होता है। लाइक जो भी वैल्यू मिला, हॉर्स के लिए 0.2, जेब्रा के लिए 0.7, और
टॉप के लिए से 0.1, तो अल्टीमेटली जिसका वैल्यू ज्यादा आपको मिल रहा है यहाँ पे 0.7, so the input image will be classified as zebra, क्योंकि ये वैल्यूज जो आपको दिख रहा है प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, so that's why, and the highest one we select, and here it will be zebra. So that way CNN works. I hope now it is clear. Right. Now next question is what is pooling in CNN? अभी हमने देखा कि यहाँ पे ये जो आर्किटेक्चर है हर एक बार आपका पुलिंग किया जा रहे हैं और उसके बाद ही प्लेटन लेयर और प्लेटन लेयर से आपका पुली कनेक्ट लेयर एंड अल्टीमेटली राइट। ये पुलिंग लेयर क्या है? सो इट रिड्यूसेस द स्पेशियल डायमेंशन टू रिड्यूस द कंपटीशन एंड प्रिवेंट ओवरफिटिंग, क्योंकि जो पूरा इमेज की बात हम करेंगे तो उसमें ज्यादा डायमेंशन रहेगा, राइट? तो इसलिए इसको रिड्यूस करते हैं ताकि ओवरफिटिंग ना हो। तो ये जो रिडक्शन होता है ना डायमेंशन का, ये काम होता है पुलिंग का, और इसको हम डाउन सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो पुलिंग क्या करते हैं? रिड्यूसेस द स्पेशियल डायमेंशन टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन, और दैट इज नोन एज डाउन सैम्पलिंग। ओके, एंड यहाँ पे मैक्स पुलिंग एंड मिन पुलिंग होता है, दो टाइप। मैक्स पुलिंग ही हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। पुलिंग के लिए अलग से क्या हम दिखाएंगे, पुलिंग तो सीएनएन में देख लिया। Still, I just want to show you if there is this is the best representation of pooling. Pooling में क्या, ये इनपुट था कन्वोल्यूशन, एक पैनल के थ्रू एक पार्ट को हमने सिलेक्ट किया कन्वोल्यूशन, देन इस पूरे जो है ये पूरे डायमेंशन को भी कम करके इतना बनाया, ठीक है? ये पूरा स्पेशल डायमेंशन को जो कम किया, ये किसने किया? अपना कूलिंग के थ्रू किया, राइट? एंड अल्टीमेटली इट गोज टू द dense layers. So from this image it is very clear. First we have a bigger dimension. From there we have the convolutional one for kernel, and then it is been reduced further with pooling. So that's the task of pooling, right? I'm repeating again, pooling reduces the spatial dimension, इसको हम बोलते हैं downsampling, to reduce competition and prevent overfitting, and max pooling is the most commonly used one. Next, why do we use RNNs for sequence? RNN को हम क्यों यूज करते हैं सीक्वेंस के लिए? Because they have memory by feeding their hidden state from the previous time step into the current one, making them suitable for time series like this. ठीक है? तो RNN जो है इनके पास मेमोरी होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, by feeding their hidden state from the previous time steps to the current one. तो जो previous step से current one तक जो मेमोरी रिक्वायरमेंट होता है, जो इंफॉर्मेशन है, वो उसको फीड करते हैं, और जिसके कारण ये टाइम सीरीज और लैंग्वेज टाइप के वर्क के लिए परफेक्ट होता है। इसलिए हम RNN को सीक्वेंस के लिए, क्योंकि सीक्वेंस के लिए क्या होता है, वी नीड द अर्लियर वंस आउटपुट, राइट? एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी हैव द मेमोरी। So for that, RNN is the most suitable one. Let me check any particular diagram exists for RNN. Right. This is the better one. You can see here. ये normal forward neural network है, input layer, hidden layer, output layer. But recurrent neural network में क्या होता है, sequentially काम करते हैं, जो previous layer का output है वो hit होता है current layer में. So that way, what happens? It improves the performance and it helps for sequence calculation. One more diagram. This one. This one. This is the part that. Okay. Recurrent neural networks, input layer, hidden layer, output. So useful for tasks that depend on a sequence of a successive states. Training, the network can be trained using back propagation.
memory because the network is a form of short-term memory. जो अभी मैंने बोला आपको ये recurrent neural network के पास short-term memory है. Simplicity, simple recurrent network has a similar form of short-term memory. Depth propagation through time, DPT. DPTT. This is an algorithm used for updating weights in the recurrent neural network to minimize the error of the network output. For every recurrent network, there is a feed-forward network with identical behavior. Right? तो यहाँ weights को update करने के लिए हम use करते हैं DPTT. DPTT stands for big propagation growth time. और हर एक recurrent network के पास there is a feed-forward network with identical behavior. Right, back activation. A recurrent connection feeds back activation that will affect the output from the network during the subsequent operation. So I hope it is clear. Recurrent neural network at least सब भूल ही गए तो एक लाइन हमें यूज करना याद रखना है कि this is we use for sequence type of work where memory is required because it has some memory, short-term memory, right? So that makes it suitable for time series that or time series or language type of work. Now, what is the issue with the standard RNN? The issue is they struggle to maintain long-term dependencies due to vanishing gradient problem over long sequence. ये vanishing gradient problem जो हमने last class में discuss किया था, vanishing gradient problem क्या होता है? During back propagation, gradients are multiplied by derivatives of activation functions layer by layer. If they are small, like seen Boyd in Tanhoy or Tanich, the gradient shrinks exponentially, causing early layer to stop learning. तो धीरे धीरे जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है, वैनिश हो जाता है. इसको वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम बोलते हैं आप, राइट? सेम थिंग हियर. ये जो आरएनएन है, आरएनएन के साथ भी यही इशू है. दे स्ट्रगल टू मेंटेन लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज ड्यू टू वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम ओवर लॉन्ग सीक्वेंस होगा तो ये वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ सकता है, राइट? Now, how does इसको ही solve करने के लिए हम use करते हैं LSTM. Now, how does an LSTM solve RNN limitation? It introduces gate. LSTM क्या करते हैं? Gates use करते हैं. It introduces gates, input, forget, and output. Input, forget, and output that control the flow of information, allowing it to selectively remember or discard data over long intervals. Right? तो LSTM RNN का जो लिमिटेशन था, जो लिमिटेशन क्या था? ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ द वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम. तो उसको सोल्व करने के लिए हमने लाया LSTM जो कि गेट्स यूज करते हैं, लाइक इनपुट, फॉरगेट, आउटपुट गेट. तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, सिलेक्टिवली रिमेंबर करते हैं या तो डिस्कार्ड करते हैं डेटा ओवर लॉन्ग टर्म इंटरवल्स. लेट्स सी द आर्किटेक्चर ऑफ LSTM. This is a very beautiful diagram I have got just now. So this is the LSTM architecture components. Input gate है, forget gate है, input gate, forget जो भी discard करना होता है, forget gate. Then output gate, memory cell, shell state, memory cell, and then shell state and hidden state. जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लम हुआ था वो अभी ये कीप कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, या तो जो जरूरत नहीं है उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, राइट? दैट इज द LSTM. Okay, now let's come back here. What is the attention mechanism? Attention mechanism क्या है? Very common or frequently asked question. Instead of relying on a single hidden state, attention allows the model to loop all parts of an input sequence simultaneously, assigning importance or weights to specific tokens related to
current आउटपुट। तो क्या कर रहे हैं, एक सिंगल हिंडेड स्टेट में रिलाई नहीं कर रहे हैं, ये अटेंशन क्या करते हैं, मॉडल को हर एक पार्ट्स में, इनपुट सीक्वेंस का हर एक पार्ट में लोग कवर करवाते हैं, और इसके लिए वो इम्पोर्टेंस असाइन करते हैं। और इम्पोर्टेंस कैसे देते हैं, बाय थ्रो वेट्स, ज्यादा वेट तो ज्यादा इम्पोर्टेंस, राइट। स्पेसिफिक टोकन्स रेलिवेंट टू करंट। अटेंशन मैकेनिज्म का मतलब ही है पूरा इनपुट सीक्वेंस को देखते हैं और उसमें किसका ज्यादा इंपॉर्टेंट टोकन है उसको वेट के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं। Got it? Just a little. Again, let me check. यहाँ पे आप देख सकते हो एनकोडर डिकोडर we will discuss in different class. You can see here, this is how attention mechanism works. But I think we need to go in depth. For that, we may need another class. I'll discuss about the attention mechanism. तो यहाँ शॉर्ट टर्म में आप ये बस याद रख लो, यहाँ पे वेट्स के थ्रू इंपोर्टेंस दिया जाता है डिफरेंट टोकन्स को। Now, what is transformer? Transformer क्या है? An architecture that relies entirely on the self-attention mechanism, discarding recurrences. This allows massive parallelization and better context capturing. ट्रांसफॉर्मर एक आर्किटेक्चर जो कि सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म के ऊपर रिलाई करता है। सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, अटेंशन मतलब हमने देख लिया था, वेट देते हैं पूरे इनपुट सीक्वेंस को, किस किस पार्ट में इंपॉर्टेंट है उसको वेट देते हैं, राइट। और रिकरेंस को डिस्कार्ड करते हैं, और इससे क्या होता है, मैसिव पैरेललाइजेशन को सपोर्ट कर पाते हैं, और इससे बेटर कॉन्टेक्स्ट कैप्चर करते हैं। दैट इज ट्रांसफॉर्मर। Why are transformers better than LSTMs for NLP? LSTM से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर क्यों ज्यादा बेटर है? Very simple, because it allows self-attention mechanisms, right? Transformer solves the bottleneck of sequential processing. They can process long-range dependencies significantly better through the multi-head attention mechanisms. जो आपका sequential processing का प्रॉब्लम था उसको सोल्व करते हैं ट्रांसफॉर्मर, और they can process long-range dependencies significantly better from multi-head attention mechanism. Now, what is generative adversarial network? GAN क्या है? Two networks, a generator and a discriminator conflict. The generator tries to create fake data while discriminator tries to distinguish it from the real data. They improve together until the generator produces realistic samples. Very interestingly, it works. कैसे काम कर रहा है आपका जनरेटर, फेक डेटा को क्रिएट करता है, और डिस्क्रिमिनेटर रियल डेटा से इसको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं, और इससे दोनों का ही इंप्रूव होता है जब तक रियल जनरेटर रियलिस्टिक सैंपल्स प्रोड्यूस लाता है, राइट। तो ऐसे ही आपका जेनरेटिव एडवर्सियल और एडवर्सरियल नेटवर्क वर्क करता है, जिसको हम गैन बोलते हैं। इसमें दो नेटवर्क, जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर फेक डेटा को क्रिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेटर इसको डिस्टिंग्विश करते हैं रियल डेटा से। दोनों एक साथ इंप्रूव करते हुए जाते हैं जब तक कि जनरेटर रियलिस्टिक सैंपल प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज LLM फाइन ट्यूनिंग? क्या होता है फाइन ट्यूनिंग? Like part and LoRa. Fine tuning involves updating weights of a pre-trained model. Weights को update करना. PET, that is parameter efficient fine tuning, or and LoRa, that is low rank adaptation, frees most pre-trained weights and only train a small number of additional adapter weights, saving memory and compute. तो फाइन ट्यूनिंग में हम weights को अपडेट करते हैं, pre-trained मॉडल का वो इसको अपडेट करते हैं, इसी को फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अच्छा बेटर ऑप्टिमाइजेशन मिले। पैप्ट मतलब पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, लोरा मींस लो रैंक एडाप्टेशन, frees most pre-trained weight and only train a small number of additional adapter weights, saving memory and compute. सबको नहीं रखते हैं, most of the
रिटेन वेट्स को फ्रीज कर देते हैं, सिर्फ स्मॉल नंबर रखते हैं ताकि मेमोरी सेव हो और कंप्यूटेशन आ जाए। तो व्हाट इज एलएलएम फाइन ट्यूनिंग, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग मतलब हम जो ऑलरेडी प्री ट्रेन मॉडल है उसका वेट्स को अपडेट करें। तो आई थिंक इट इज ओके फॉर दिस क्लास। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर हम पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।